एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि राखी बांधी है और वो भी 1 साल बांधी थी उस वजह से नहीं अब तो भाई बहन हो गए। आई कैन अंडरस्टैंड सोनम और मैं कभी ऑपोजिट नहीं हो सकते, पर फिर भी सोनम और मैं भी काम कर सकते हैं एक पिक्चर में। आजकल तीनों खानों के साथ बिजी, बीच में कपूर आ जाए शायद, देखते हैं। हाय, दिस इज अर्जुन कपूर एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हंगामा। Katrina Kaif is very fond of you. She considers you as brother or something. But isn't that a disadvantage? She's a fantastic actress. आप तो मतलब pairing होनी चाहिए ना? वो पर्सनल लाइफ है ना। वो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, मीडिया विल कंसिडर इट एज अ प्रोफेशनल थिंग आल्सो। आई थिंक दैट डजंट मेक अ डिफरेंस टुडे। आई एम श्योर इफ आई एम वर्दी इनफ ऑफ डूइंग अ फिल्म विद हर, आई डोंट थिंक नो प्रोड्यूसर विल वांट टू पुट दैट इन द वे। हमारा खून का रिश्ता नहीं है। आवर इक्वेशन इज समथिंग दैट गोज बियॉन्ड ऑल दैट एंड दैट्स She's very fond of you. I am very fond of her. We get along like a house on fire, and I think we share a great equation. And we've known each other for so long now, since she's been part of this industry. Since मैंने प्यार क्यों किया तब से जानता हूँ मैं. But I think we keep making fun of each other, fooling around. Today, if we get cast together, I think the payoff will be the fact that we have a great comfort with each other. और आज के ज़माने वो भी गए that you only have to be opposite each other to do a film. You can do something very interesting where we might not be opposite each other also, and still we might do justice to it. It's a character that works. Yeah, so it'll be strange to look at it कि एक ही point of view से देखो कि राखी बांधी है और वो भी 1 साल बांधी थी उस वजह से नहीं अब तो भाई बहन हो गए। I can understand सोनम और मैं कभी opposite नहीं हो सकते, पर फिर भी सोनम और मैं भी काम कर सकते हैं एक पिक्चर में। You can have different characters in fact. You play characters, no, it's not. अभी वो run of the mill ज़माने भी तो गए कि हीरो हीरोइन के साथ रोमांस करेगा, वो भी है, but I think today it's about characters. So I'm looking forward to working with her in front of the camera. अब I have to be worthy enough and she has to say yes basically. It's not easy when it comes to Katrina Kaif. Correct. आजकल तीनों खानों के साथ busy है। भैया Katrina. बीच में कपूर आ जाए शायद, देखते हैं। In fact, I still remember almost 2-3 years back. In fact, Arjun had requested me that if we can possibly share one picture of Katrina with Arjun that had published on Bollywood Hungama. That was, you remember that? किसी ने फोटो लेके डाल दी थी तो I guess people wanted to use it. मैं ना क्यों बोलूँगा? I was more than happy if people are putting up a picture of me and her because I share a great equation with her. Tell us something about the experience of shooting this film and the entire heartland of the country. धुएंधार और धमाकेदार experience. Director like Habib Faisal, I think Do Duni Char was a phenomenal film and this is looking very promising in fact. जब हमें बताया गया था कि it's going to be shot in one schedule, मैं थोड़ा सा डर गया था उस बात से क्योंकि I've never been away for that long from my house. But the fact that we shot it one schedule is its biggest asset because we could get into character and stay there and actually do justice to the material Habib sir had written because हम घुस गए थे वहाँ जाके. 75 days of shooting, 90 days of living away, living in a place like Lucknow, interacting with the local people there, shooting on live locations, having to deal with the traffic, the stress, the chaos, the crowd control. So many factors that came in. I injured myself. I hurt my leg while I was doing a running shot wearing slippers. And that was almost like before we had started all the action, that's the first day I was doing something and I hurt myself. When we were shooting Chokra Jawan, which looks like we all having fun, we were shooting in 0 degrees that day. सब की अच्छी खासी हालत खराब थी उस दिन. Gauhar had to barely wear, she's wearing a घाघरा चोली and it's very difficult to dance. Plus वो जो मेरी बाइक है पिक्चर में YSD, वो अपने आप में एक सुपरस्टार है. जब उनका मन करता है वो चलती है, जब उनका मन करता नहीं चलती. कभी ब्रेक नहीं चलता, कभी हेडलाइट नहीं चलती. तो YSD के मूड पे और डेट्स पे हम शूटिंग किया करते थे. बिगनिंग में तो मैं मतलब आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड बिकॉज मैं एक्टिंग करने की कोशिश अभी शुरू कर रहा था और यहाँ पे एक स्टार टैंड्रम थ्रो किया जा रहा था YSD से. Chokra Jawan, a colleague of mine was saying the other day कि यार ये this looks like a male version of मुन्नी बदनाम हुआ and item boy हो चुके हैं Arjun Kapoor. I think that song is looking very promising. I think once the movie releases, I don't know what's the context of the song, but it's looking very promising in fact. And Gauhar Khan is rocking like anything. Yeah, she's got a great character in the film. She's actually playing a proper character. She's playing a proper character. अच्छा. तो जब आप lyrics भी सुनते हो उसमें कहते हैं वो चांद बेबी जो चांस देगी, जो मैं कूद के कहता हूँ वो चांद बेबी जो चांस देगी, तो चांद बेबी उनके किरदार का नाम है. वो चांद बेबी जो चांस देगी, प्यास क्या है मैं भूख भी मिटा दूँ. शायद लोग नहीं जानते, but today I think I should tell people that she's a character in the film also. When I read the script, I knew this was that one opportunity for me to have fun. I love dancing. I got very lucky that I got Chinni sir and Rekha ji who are known for these kind of songs. I mean, if you look at that history as choreographers, उन्होंने जुम्मा जुम्मा किया है. They've done such big songs. अभी recently दबंग में उनको हमका पीनी है की है. उनकी taking, उनका scale, and they make heroes look like heroes. I think I was very fortunate to have such experienced people guiding me. और उस सब में हबीब फैसल बीच में आके बोलते थे यार कैरेक्टर में ही नाचना तुम. तो बहुत इंटरेस्टिंग था. Very sophisticated guy. Habib Faisal is a very sophisticated guy. He's making all these films and वो बहुत ही पंजाबी किस्म के बहुत ही बढ़िया से dialogues लिखते हैं, लेकिन he's a very sophisticated guy. First time I want to tell people he's lived such an interesting life. वो भोपाल से हैं, दिल्ली में पढ़े हैं. He's gone and studied abroad. Then he's come back, worked as a cameraman with NDTV.
Then he started writing. His experience shows when we work with him, we knew he's lived this life. He's seen this life very up close. He's traveled with NDTV, he's covered the war and stuff like that. So his experience is tremendous. And the way he explains to you, अगर उसके बाद तुम नहीं कर सकते तो तुम में कुछ खराबी है, because he's really clear. और वो आपको करवाते रहेंगे जब तक you don't give him what he wants, because he knows it's in you. उनका सीधा ऐसा था, तुम एक्टर हो ना, करो. I'm very fortunate beyond above and all. People come into this industry to work with Yash Raj. मेरी पहली पिक्चर मुझे यशराज के साथ मिली. उसके ऊपर से एक ऐसा डायरेक्टर जो इतनी बारीकी में जाता है हर चीज़ को लेके, एवरी डिटेल, एवरी वर्ड ही नोज, बिकॉज ही इज अ राइटर हिमसेल्फ, तो ही नोज व्हाई इज रिटन इट. तो अगर मैं कम कर रहा हूँ या ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं एक वर्ड भी ऐड कर देता था, वो याद दिलाते थे इसको ऐसे करोगे तो इसका ये मतलब वहाँ पे निकलेगा, तो मत करो. ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन एंड दैट शोज इन हिज वर्क क्राफ्ट ऑल्सो. हिज क्राफ्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग.